Today we are going to complete two topics, housekeeping and hospital infection control. And both topics are interrelated, so that's why I took to our class. Now we are going to understand this. I request you to kindly read this because it is more of self-explanatory in nature than I should explain. So I would request someone to read this. Dr. Vishaka, can you please start reading this? Yes, sir. Housekeeping services in a hospital is entrusted with maintaining a hygienic and clean hospital environment conducive to patient care. The hospital housekeeping services comprises of the activities related to cleanliness, maintenance of hospital environment, and good sanitation services for keeping premises free from pollution. Housekeeper literally means keeper of the house. Self-explanatory. Go ahead. Yes. Hospital housekeeping management may be defined as the branch of general management which deals with cleanliness of the hospital, general environmental hygiene, sanitation and disposal of waste using appropriate methods, equipments, and manpower. The housekeeping services can be summarized as all the activities directed towards a clean, safe, and comfortable environment. Sure. Self-explanatory. Objectives क्या है housekeeping के? Please read this. To attain and maintain high standards of cleanliness and general upkeep, to train, control, and supervise staff under its establishment, to attain good relations with other departments, to ensure safety and security of all staff under its department, and to keep superior authorities informed about day-to-day activities. Control and issue of cleaning materials and equipment, to maintain official recording on staffing, cleaning materials and equipment. So basically simple है कि साफ रहना चाहिए हॉस्पिटल, सारे स्टाफ को सुपरवाइज करना है, दूसरे डिपार्टमेंट जैसे F&B डिपार्टमेंट के साथ में अच्छा रिलेशन होना चाहिए, नर्सिंग डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन में काम होना चाहिए, सबका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ में, जैसे सपोज करो मेंटेनेंस में कोई क्या बोलते हैं, कहीं पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है तो वहां पे गंदगी फैल जाती है सारे में, तो उसको साफ सफाई करने का काम किसका है? हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। तो वो पहले से बता के रखे कि भैया हम इतने बजे हम ये वाली मेंटेनेंस करेंगे, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट पहले से ही उसको इंश्योर करे कि भैया हमारा एक आदमी वहां पे हो जो रेगुलरली उसको क्लीन कर सके। ठीक है? Yes. ओके, जो रेगुलरली रिकॉर्ड्स वगैरह रख सके। दिस इज द सिंपल ऑब्जेक्टिव, दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी इन नेचर। ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। Principles of cleaning in a healthcare environment. Healthcare organization may be broadly categorized into two components for the purposes of environmental cleaning. One is hotel component, other is hospital component. In hotel component is the area of the facility that is not involved in direct patient care. This includes public areas such as lobbies and waiting rooms, offices, corridors, elevators, and stairwells, and services area. Areas designed in the hotels components are cleaned with a hotel clean regimen. Hospital component is the area of the facility that is involved in direct patient care. This includes patient bed space or room, including nursing stations, procedure rooms, bathrooms, clinic rooms, and diagnostic and treatment areas. Areas designated in the hospital components are cleaned with a hospital clean regimen. तो सिंपल बात है, एक हॉस्पिटल में दो कंपोनेंट होते हैं। होटल कंपोनेंट जैसे जहाँ वेटिंग एरिया है, ठीक है, वेटिंग एरिया की साफ सफाई का काम है, तो जैसे होटल्स में होता है वैसे हो जाता है। हॉस्पिटल कंपोनेंट मतलब जैसे अब कोई ओटी का एरिया है तो उसके लिए अलग तरीके के केमिकल्स चाहिए, हमें डिसइंफेक्शन चाहिए, कितनी बार चाहिए, उसका रेजिमेंट अलग है। जैसे मतलब क्या है कि अगर एक पेशेंट की ओटी हो गई है वहां पर, तो ये नहीं कि उसके बाद में दूसरा पेशेंट भी आ जाए और सफाई ना करे, चलो दूसरा भी आ जाएगा कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर क्लीनिंग होगी, बहुत अच्छे से क्लीनिंग होगी और उसके बाद ही दूसरा पेशेंट भी आता है। तो इसीलिए हॉस्पिटल की जो क्लीनिंग होती है दोनों कंपोनेंट के साथ में होती है, होटल कंपोनेंट एंड हॉस्पिटल। चलिए, Evidence for cleaning. The environment of the healthcare organization has been shown to be a reservoir for infectious agents such as bacteria. Example, methicillin-resistant Staphylococcus aureus, MRSA, vancomycin-resistant Enterococci,
Clostridium difficile. Clostridium difficile, Pseudomonas species, etc. Viruses, example, influenza, respiratory syncytial virus, rotavirus, and fungi, especially Aspergillus species. ठीक है. However, the presence of yes, sir. Go ahead. However, the presence of microorganisms alone on objects and items in the healthcare environment is not sufficient to demonstrate that they contribute to infection. Various studies worldwide have shown that microorganisms can survive after inoculation onto items, surfaces, and/or can be cultured from the environment in healthcare organizations, and/or can proliferate in or on items, surfaces in the environment. There is a direct means of microorganisms from contaminated items, surfaces in the environment to be transferred to hands of healthcare providers. अच्छा, तो बेसिकली हमारे पास में कितने सारे बैक्टीरियाज हैं, ये सबका हार्बर होता है हॉस्पिटल के अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है, लेकिन इनमें से कितने डिजीज करते हैं इसके ऊपर स्टडीज रेगुलरली चलती रहती है. पर हमको फिर भी कंटेमिनेशन फ्री रखना चाहिए हमें हर हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट. अच्छा, मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछना चाहता हूँ, द मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टेड एरिया और स्पेस और आइटम इन अ हॉस्पिटल, व्हाट इज इट? एक आध का नाम बता दो. मोस्ट कॉमनली मतलब जो कि सबसे गंदा हो सकता है. एरिया एरिया या आइटम. ठीक है, हॉस्पिटल का कौन सा वो आइटम है जो सबसे गंदा हो सकता है? इस एरिया में तो शायद इमरजेंसी होता हो. चलो ठीक है, आइटम बताओ, आइटम. सर स्टेथोस्कोप. और सेरोस्कोप भी उतना नहीं होता होगा. ठीक है, जितना होता है रिकॉर्ड फाइल, मेडिकल रिकॉर्ड फाइल, जो पेशेंट की फाइल होती है, क्योंकि वो नर्सिंग भी टच करते हैं, हाउसकीपिंग भी टच करता है, उसको डॉक्टर्स भी टच करते हैं, एंड वो सबसे ज्यादा इन्फेक्टेड होता है. ठीक है, प्लीज गो अहेड. Exposure to contaminated items, surfaces in the environment is associated with acquisition of colonization or infection, and this proves that decontamination of item surfaces results in reduction of infection transmission, that is lower rates of colonization or infection. Therefore, environmental cleanliness is intrinsically linked to infection prevention and control. A clean, well-ordered environment provides the foundation for excellent infection control practice to flourish. The primary objectives of hospital cleanliness are twofold. One is to disinfect so that the threat of nosocomial infection is reduced. And the other is to create a clean and safe, attractive environment for patient, staff, and visitors. ठीक है, सो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि बैक्टीरिया आके वहां पे मल्टीप्लाई ग्रो करने लगते हैं. ठीक है, अब बात ये है कि हमारा हॉस्पिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है. एक तो पहली बात कि होम नोजोकोमियल इन्फेक्शन ना हो, मतलब हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फेक्शन ना हो, और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्लीन और सेफ बना दिया जाए पेशेंट और स्टाफ और विजिटर्स के लिए कि भाई मतलब वो आके आना पसंद करें. ऐसा नहीं कि क्योंकि हम आज की डेट में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते, सबसे बड़ा रीजन ये है कि वहाँ पे क्लीननेस की प्रॉब्लम है, वॉशरूम्स क्लीन नहीं है, यही तो रीजन है, और क्या है रीजन? Yes, sir. ओके. Supervision checklist and SOPs. It is of the utmost importance that each hospital develops its own protocols, SOPs, and training program for its personnel for housekeeping, irrespective of its services are outsourced or not. हमने उस दिन बात भी किया था कि हॉस्पिटल का जो हाउसकीपिंग सर्विसेज है वो आउटसोर्स्ड होना चाहिए या इन हाउस होना चाहिए. ठीक है, सो Yes. हमने बात किया था कि आउटसोर्स्ड ही ज़्यादा प्रेफरेबल होता है, क्योंकि हॉस्पिटल की कोर कॉम्पिटेंसी हाउसकीपिंग नहीं है, हॉस्पिटल की कोर कॉम्पिटेंसी है ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट. सो इन हाउस में ट्रीटमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें इन हाउस होनी चाहिए. ओके, Yes. चलो. Facility maintained by checklist, daily male-female washroom, OPD daily feedback logbook, observations, floor log sheet, vacant room checklist, OT cleaning checklist,
mortuary cleaning, water cooler checklist, maintenance for the day. ये सारी चेकलिस्ट डेली मेंटेन होनी चाहिए। जैसे फ्लोर मतलब अगर मेल और फीमेल वॉशरूम है तो क्या होना चाहिए कि कहीं पानी का कोई टैप तो लीक नहीं कर रहा है, डेली मतलब दिन में 3 बार होना चाहिए। तो अगर हो रहा है तो यस कर दो, नहीं तो नो काटा लगा दो। ठीक है। क्या फ्लोर पे पानी पड़ा है? ठीक है। अगर पानी स्पिल हो हुआ पड़ा है तो उसको वो यस कर दो, नहीं हो रहा तो नो कर दो उसको। क्या पानी लीक कर रहा है? ठीक है, पानी लीक कर रहा है मतलब कोई कोई ड्रेन जैम है, अगर है तो ओके कर, नहीं कर दो नो हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से क्या यूरिनल्स में से स्मेल आ रही है तो वो अगर आ रही है तो यस कर दो, नहीं आ रही तो नो। ठीक है। तो ऐसे हर एक जितने भी हमें चेकलिस्ट पड़ी है, हर एक चेकलिस्ट बनाई जाती है उससे रिलेटेड चीजों की। ठीक है। तो अगर अब वो सारी चेकलिस्ट रेगुलरली मेंटेन करनी चाहिए ताकि क्या है, हम एक अच्छी क्वालिटी हाउसकीपिंग सर्विसेज को इंश्योर कर सकें। चलिए। Which all items found to harbor microorganisms in the healthcare environment? Bed, bed frames, bed linen, bedside table, bedside locker, bed rail, call bell, curtains, blood pressure machine, dustbin, keyboard, faucet handle, couch, door handle, thermometer, TV remotes. पढ़ो। Patient bathroom, floor around bed, light switch, over bed table, patient lift, pen, pillow, mattress, sink, stethoscope, tables, telephones, television, toilet commode, stationery items, window frames. ये सब के सब बहुत गंदे होते हैं, मतलब इनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं अगर अच्छे से क्लीन ना करें जाए। What ठीक है। should be the preferred space, preferred surface characteristics for hospital with respect to housekeeping? Ease of maintenance, repair and cleanability, inability to support microbial growth, smoothness, non-porous, good sound absorption, durability, sustainability. जैसे अगर आपने हॉस्पिटल में देखा हो तो जहाँ वॉल और फ्लोर जहाँ मीट करता है, ठीक है, वो एरिया कर्व्ड होता है। कभी आपने नोटिस करा है हॉस्पिटल के अंदर वो एरिया कर्व्ड होता है? वो ऐसे 90 डिग्री पे नहीं होता, वो कर्व्ड होता है। देखा है किसी ने? आइडिया है? No, sir. नहीं है तो आप जब भी आप हॉस्पिटल जाओगे चेक करना, वो कर्व्ड इसलिए होता है क्योंकि अगर 90 डिग्री पे होगा तो उसकी क्लीननेस कोनों की मुश्किल हो जाती है। अगर वो कर्व्ड होता है ना तो आसानी से उसकी क्लीननेस हो जाती है, तो उससे चांसेस कम होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के। ठीक है। चल। Presence of low levels of volatile organic compounds to reduce off-gassing, low smoke toxicity, initial and life cycle cost effectiveness, sleep resistance, ease of installation, demolition and replacement, resilience and impact resistance, non-toxic and non-allergenic. वो और जैसे क्या होता है जहां पर भी ना आपने देखा होगा जब भी आपके घर में पेंट होता है कभी भी, तो जब आप पेंट वाली जगह पे जाओगे तो आपकी आंखों में बहुत ज्यादा जलन सी होने लगती है, इनफैक्ट आंसू भी आने लग जाते हैं। ठीक है। तो वो होता है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जितना ज्यादा किसी एरिया में पेंट होगा उतना ज्यादा वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका वहां से रिलीज होगा। और मतलब पेशेंट जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है, तो उनको और मतलब दिक्कत दिक्कत हो सकती है इस चीज, तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। ठीक है। ओके। Housekeeping surfaces, floors, wall tabletops have been associated with outbreaks of vancomycin-resistant enterococci and methicillin-resistant staphylococcus, and more recently with Clostridium difficile and noroviruses. The increasing incidence of resistant organisms has prompted further discussion on the need for routine surface disinfection. However, these special problems do not justify routine disinfection of all hospital floors and furnishings. It has been demonstrated that the rate of healthcare associated infections are not significantly different between units cleaned with disinfectants and those units cleaned with detergents. Routine cleaning housekeeping surfaces with detergents is sufficient in most circumstances. तो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे स्टडीज ने ये देखा है कि ऐसा नहीं कि अगर हम डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं तो ही वहां पे मतलब इन्फेक्शंस कम होते हैं।
वो जब भी कम होता है तो हम नॉर्मल डिटर्जेंट से भी उसे साफ करते हैं। तो इसीलिए क्या है, डिसइंफेक्टेंट महंगा आता है, डिटर्जेंट सस्ता आता है, तो हमें डिटर्जेंट से ही नॉर्मली सफाई कर लेनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं करनी। चलिए। Hospital surfaces require regular cleaning and removal of dust. Dry conditions favor the persistence of gram-positive cocci in dust and on surfaces, whereas moist, spoiled environment favor the growth and persistence of gram-negative bacilli. Fungi are also present in dust and proliferate in moist, fibrous material. Cloth furnishings have been shown in harbor higher concentrations of fungi than non-porous furnishings. In general, pathogenic bacteria can be effectively removed from the surfaces of upholstered furniture. Contaminated stuffing and foam cannot be decontaminated if breaks into fabric or leaks of body fluids or spills have occurred. Wherever feasible, an alternative to cloth surfaces should be used. Now, what are the roles and responsibilities of a medical superintendent? हॉस्पिटल के एमएस का हाउसकीपिंग में क्या रोल होता है, प्लीज? Overall supervision and monitoring of the sanitation program of the hospital, institution, organization. Chairing the committee on sanitation services and providing the guidance whenever required. Oversight of planning, development, and budget monitoring. Manpower planning. Appointing and disciplinary authority. Interaction and assigning duties to immediate subordinate officers. Self-explanatory. Now the sanitation का एक सेकंड. Now officer in charge की क्या roles and responsibility? She should either be a faculty from Department of Hospital Administration or equivalent to the rank of deputy. ADDL क्या होता है? Additional medical superintendent. Additional medical superintendent has full administrative responsibility for the hospital sanitation program. Usually reports to the top management for sanitation services, that is medical superintendent, medical director, etc. Full responsible for planning, organizing, staffing, directing, controlling, and evaluating the sanitation program. Initiate safe and set policy, procedures, standards, and goals. Develop and apply an internal program of management review, appraisal, and improvement. So basically इसको सारा काम अल्टीमेटली देखना इसको है. ये खुद एमएस को रिपोर्ट करेगा, लेकिन अल्टीमेटली इसने काम देखना है. कितना मटेरियल आएगा, कितने लोग लगेंगे, कितना मैन पावर चाहिए, कितना कौन सा मटेरियल चाहिए, एसओपी डेवलप करना है कि कौन सी एसओपी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे सफाई की जानी चाहिए, कैसे ट्रेनिंग की जानी चाहिए. ये सारा काम ऑफिसर इंचार्ज का होता है. और ये इक्विवेलेंट होना चाहिए डेप्यूटी डीएमएस या एएमएस, एडिशनल एडिशनल मेडिकल एडिशनल एमएस के से. ठीक है, ये दोनों मतलब इसी के इक्विवेलेंट पोजीशन पे होना चाहिए, अदरवाइज doesn't make sense, right? Yes, sir. Okay. Coordination of hospital sanitation activities with other programs and activities in the hospital. Establish the balance between quality and quantity in light of budget and ceiling constraints. Development and maintenance of standards for cleanliness and sanitation. These standards encompass various aspects, example, frequency of cleaning, the methods, procedures, and safety precautions to be followed. The selection, measurement, and proper use of housekeeping and cleaning supplies, and the use and maintenance of housekeeping equipment. Any other duty assigned by head of institution hospital. So basically these are all the duties of officer in charge. ठीक है, मैंने बताया था ना, इनको ये भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे डिटर्जेंट यूज करना है, डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, कहाँ पे डिटर्जेंट, कहाँ पे डिसइंफेक्टेंट यूज करना है, इन सब के बारे में थॉट प्रोसेस कौन करेगा, यही बनाएंगे पॉलिसी. और ये पॉलिसी ये एमएस को दिखाएंगे, वो उसको साइन करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसको अप्रूव करेंगे. ओके. Hospital grade disinfectants. Alcohol 60 to 90%, ethyl or isopropyl alcohol, chlorine, sodium hypochlorite, bleach, जिसको बोलते हैं calcium hypochlorite, phenolics, quaternary ammonium compounds,
iodophores, hydrogen peroxides. So these are the hospital grade disinfectants. Okay. Solution to remove iodine stain on linoleum floor in OT. Mix a solution consisting of 1/2 cup of water and 1/2 cup of ammonia. Dip a clean dry rag into the solution. Rub the stained area with the rag. Rinse the rag under cool running water and repeat steps 2 and 3 if the stain seems to be coming up fairly easily. Soak the entire rag in the ammonia and water solution. Wring it out and cover the stained area if the aforementioned steps don't seem to be very effective. Leave the soaked rag on the stained area for 10 minutes. After 10 minutes, check to see if the stain will come up. If the stain is lifting but not completely gone, repeat step 5. Mop the linoleum and wax for optimum appearance. अपीयरेंस ठीक है. ये जैसे आयोडीन का स्टेन जैसे गिर जाता है तो कैसे साफ करना है, दिस इज द वे. ओके. Other body substances such as urine, feces, and emesis. It must be contained, cleaned, and the area disinfected immediately. Spills of blood and other body substances such as urine, feces, and emesis must be contained, cleaned, and the area disinfected immediately. The healthcare organization shall have written policies and procedures for dealing with biological spills that include. अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे क्या क्या होता है, लेकिन मैं आपको पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा स्पिल मैनेजमेंट के ऊपर. 5 मिनट की वीडियो, बहुत अच्छी वीडियो, इससे काफी कुछ क्लियर हो जाएगा. चलिए, विल सी दिस. कैन यू हियर द ऑडियो आल्सो? No, sir. ऑडियो नहीं रही, चलो वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है इस पे. ध्यान से देखना, एक बार नहीं समझ में आएगा तो दोबारा भी देख लेंगे. Why did they announced code orange? Because इस पेशेंट ने वॉमिटिंग कर दिया. ठीक है.
So I hope you understood this properly. और Yes, sir. ठीक है, तो ये ना मेजरली आपने समझ ही लिया है, क्योंकि ये स्पिल मैनेजमेंट कैसे होता है, ठीक है ना. अब नाउ विल सी दिस, रीड दिस ओनली. Clearly defined assignment of responsibility for cleaning the spill in each area of the healthcare setting during all hours when a biological spill might occur. Provision for timely response, a method for the containment and isolation of the spill, training of staff who will clean the spill, access to PPE What is equipment, PPE? supply personal protective equipment. Okay, go ahead. Equipment supplies, waste and linen disposal for staff who clean the spill. Proper disposal of waste, procedures to be followed if there is a staff exposure to biological material, documentation of the spill incident. इसे डॉक्यूमेंट भी करना है. Cleaning a biological spill. Assemble materials required for dealing with the spill prior to putting on PPE. Inspect the area around the spill thoroughly for splatters or splashes. Restrict the activity around the spill until the area has been cleaned and disinfected and is completely dry. Put on gloves if there is a possibility of splashing. Wear a gown and facial protection mask and eye protection or face shield. Confine and contain the spill. Wipe up any blood or body fluids spills immediately using either disposable towels or a product designed for this purpose. Dispose of materials by placing them into regular waste receptacle unless the soil materials are so wet that blood can be squeezed out of them, in which case they must be segregated into a biomedical waste container, that is yellow bag. Disinfect the entire spill area with a hospital grade disinfectant and allow it to stand for the amount of contact time recommended by the manufacturer. Wipe up the area again using disposable towels and discard into regular waste. Care must be taken to avoid splashing or generating aerosols during the cleanup. Remove gloves and perform hand hygiene. ठीक है. So this is the way हमने ये जो सबको देखा है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट, गो अहेड. Which all equipment used for cleaning in hospitals? The following is the list of advised equipment which can be used for sanitation purposes. The list is not exhaustive and different hospitals can identify the number and types as per their organizational characteristics and workload. Heavy duty scrubber dryer, ride on scrubbers, walk behind scrubbers. ये ना आप पढ़ Vacuum. लेना, सुनो सुनो, ये पढ़ लेना, ये कौन कौन से इक्विपमेंट है. मैं इनको दिखा देता हूँ आपको, फोटो दिखा देता हूँ कि देखो इतने सारे इक्विपमेंट्स है ये, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ. ठीक है, ये है हैवी ड्यूटी स्क्रबर एंड ड्रायर, ये राइड ऑन स्क्रबर है, ये वॉक बिहाइंड स्क्रबर है, ये हाई प्रेशर जेट क्लींजर एंड वॉशर है, ये रोड स्वीपर है, स्क्रबिंग वैक्यूमिंग कंबाइंड है, ये पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग, डबल बकेट रिंगर, स्प्रे पंप फॉर पेस्ट कंट्रोल, रबर स्क्वीजर. ठीक है, तो ये सारे इक्विपमेंट है. नाउ विल मूव ऑन. With regards to biomedical waste management, key function of hospital administration and housekeeping. To get authorization of State Pollution Control Committee, State Pollution Control Board, to ensure the effective implementation of all the provisions of the biomedical waste management and handling rules 1998. होल्ड ऑन. हम यहाँ पर आपके पास में एक, आई एम क्वाइट श्योर आपका एक अलग से सब्जेक्ट होगा, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट. ठीक है, हम यहाँ पे वो वाला पोर्शन नहीं कवर करेंगे बिकॉज वो अपने आप में बहुत बड़ा पोर्शन. ठीक है, लेकिन बहुत कुछ पोर्शन हमारा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का अभी हम हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ेंगे तो उसमें भी कवर हो जाएगा. पर ये एक सेपरेट सब्जेक्ट है, सेपरेट पूरा बहुत लंबा टॉपिक है. तो अभी मैं इसको यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, थोड़ा
जो आपका जो रेगुलर सब्जेक्ट है आप उसमें पढ़िएगा इसको, ठीक है। बाकी क्या है, थोड़ा बहुत जो जो पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, कुछ पॉइंट्स आएंगे भी हम, तो उन्हें हम स्किप नहीं करेंगे, उन्हें पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये इसीलिए हमें स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमको इसका वो चाहिए होता है, लाइसेंस और ऑथराइजेशन चाहिए होता है हमको। कंसेंट टू ऑपरेट बोलते हैं इसको, सीटीओ, कंसेंट टू ऑपरेट, कि हम हॉस्पिटल चला सकते हैं, और वहां पे जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होगा हम उसको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली ही डिस्कार्ड करेंगे। इसका भी हमें अंडरटेकिंग वगैरह देनी पड़ती। चल, Constitute BMW Management Committee. Identify and designate a nodal officer as Officer IC. इंचार्ज। Survey survey and evaluation of waste generated in the hospital. Identification of locations for placement of bins equipment. Procurement of equipment, materials and supplies, color-coded bins, bags, needles, needle destroyer, and puncture-proof containers, color-coded covered waste collection trolleys, etc. Source reduction by encouraging reusable. Strategy implementation by proper segregation as per policy, proper collection and transportation and adequate treatment and disposal. Contract finalization with outside agency, safety measures for all categories of staff, awareness and training all categories. तो बेसिकली हमको सारे इक्विपमेंट डस्टबिन वगैरह खरीदने हैं जो कि हमारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में यूज होते हैं, ठीक है। और हमने ऐसी स्ट्रैटेजीज बनानी है जिससे कि हम बायोमेडिकल वेस्ट कम से कम जनरेट हो हमारा, ठीक है। तो सारी स्ट्रैटेजी, चाहे मैनेजमेंट हो चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी हमको अपनानी हो ताकि हमारा कम से कम जनरेट हो, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइजेशन की भी कौन सी एजेंसी के साथ में हमको आउटसोर्स करना है इसको, जितना भी स्टाफ है उनके लिए क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए, जैसे उनको पीपीई किट दिलाई जानी चाहिए, तो कितनी पीपीई किट्स होनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर, अवेयरनेस और ट्रेनिंग प्रोग्राम, सॉफ्ट स्किल्स वगैरह प्रोग्राम दिया जाना चाहिए। What training should be imparted to housekeeping staff? Orientation, organization, job description, duties and responsibility, grooming, uniform and protective gear, leave procedures, clinical chemical use and dilution rate, handling equipment with demonstration. तो इन सब पे हमको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। Step-by-step cleaning procedures for different areas and surfaces. For example, cleaning of furniture, light fixtures, maintaining upholstery, floor care, glass cleaning, metal polishing, tiles cleaning, elevator cleaning, staircase cleaning, dado and skirting cleaning, corridor cleaning, dusting, mopping, stain removal, any other areas or surface. Reporting, repair and maintenance, safety and security, garbage removal, fire safety, penalties for misconduct not working. ठीक है, ये सारा जो है हमको इन सब के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह दी जानी चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस पे देखते हैं हम ड्यूरेशन। Duration and frequency of training of sanitary attendants. High risk area. 24 hours of intensive training on general cleaning and infection control, followed by 7 days of supervised duties. After that, training of 4 hours every month. Moderate risk area. 16 hours of training on general cleaning and infection control, followed by 5 days of supervised duties. After that, once in every month for 2 hours. Low risk area. 8 hours of training on cleaning practices, followed by 3 days of supervised duties. After that, every 6 months for 2 hours. ठीक है, चलिए। Housekeeping manpower to ensure appropriate 24-hour coverage. 1 sanitary attendant for 2 hospital beds, 1 sanitary supervisor for 12 to 15 sanitary workers, 1 sanitary inspector for 5 to 7 sanitary supervisors, 1 sanitary officer for 5 to 7 sanitary inspectors. It depends upon factors: building factors, occupancy factors, equipment factors, training factors, infection control factors, presence of outbreaks. देखो इन सब पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, जैसे एकदम से कोविड आया तो एकदम से आउटब्रेक आ गया एक, ठीक है, एक एपिडेमिक आ गया, एक पैंडेमिक आ गया, तो एकदम से इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हो गई। बिल्डिंग फैक्टर्स, अगर बिल्डिंग बिल्डिंग क्या है, अगर ऐसी बनी हुई है जो कि मतलब एक लाइन में है बिल्डिंग,
ठीक है। सो मतलब एक लाइन सी बनी हुई है बिल्डिंग की, एक लंबा, बहुत लंबा कॉरिडोर है उसमें। तो ऐसे हॉस्पिटल्स की क्लीनिंग के लिए हमें ज्यादा लोग चाहिए। अगर हमें हमारा जो है नाइटिंगेल टाइप वार्ड बना हुआ है, उसमें हमको कंपैरेटिवली कम लोग चाहिए और आसानी से हो जाता है वो। ठीक है। ऑक्यूपेंसी अगर बहुत ज्यादा हाई ऑक्यूपेंसी तो भैया ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। ठीक है। सो ये सब फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से हमें डिसाइड होता है कितने लोग हमें रखने पड़ेंगे। चलिए। General principles of handling and disposing cytotoxic waste. Dispose SAPs, containers, and cytotoxic waste according to appropriate procedure in a poly bag designed for hazardous wastage. Do not clip or recap needles. Discard the needle syringe unit into a convenient, appropriately labeled puncture-proof container. Discard all gauze, tubing, bags, and bottles, etc. in appropriately labeled bags and seal. Remove gown and gloves and discard in similar manner. Wear latex powder-free gloves while disposing chemotherapy drugs. Wear a gown that is low, non-permeable with long sleeves, cuffed and solid-fronted. Use aerosols-free mask. देखो, कौन सी ट्यूबिंग, कौन सा बैग, कौन सी बोतल, कौन से बिन में जाना है, ये सब कुछ बताया जाता है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में। ठीक है। आपने आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट, वैसे अभी पढ़ तो लिया ही होगा। सर थोड़ा बहुत तो ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। हाँ तो बस ठीक है, वो उसी के बारे में बात करें। आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा ये। ठीक है। और हॉस्पिटल में भी डेली देखते ही होंगे आप लोग। ओके। Clean up spills using available chemicals and disposable towels or sponges. For large spills, double gloving is recommended. If direct exposure occurs, immediately rinse the area with running water. In case of exposure with eyes, rinse your eyes with an eye wash solution or sterile saline. Remo Report all episodes of drop exposure to consult physician immediately. Wash face and hand completely with running water. ठीक है। Management of spillage of cytotoxic drugs. The spillage of cytotoxic drugs should be done with care. Cleaning required for cytotoxic drugs is different than any other drugs. A specific procedure must be maintained for spillage and it should be treated appropriately. On spillage of cytotoxic drugs, neutralize the effect with an appropriate chemical solution and then wash with detergent and water immediately. सो ये हमने जो अभी पढ़ा था, तो स्पिल किट में क्या क्या चीजें हैं वो सब लिखा हुआ। नाउ विल मूव ऑन टू पेस्ट कंट्रोल। Pest control is an integral component of sanitation services. For hospitals of 200 bedded or more, separate tender can be floated for work by specializing agencies. In smaller hospitals, the same housekeeping tender shall include pest control services. This is the most important component for outsourcing of pest control services, and due care should be taken while drafting the terms and conditions. Only those chemicals should be used in hospital setting which are fit for usage in healthcare setting. Details of chemicals should contain name of chemical, name of company, concentration, chemical composition, quantity consumed, size of packing, batch number, manufacturing and expiry date, chemical procurement, quality certification by using chemical certified by only following bodies: WHOPES, World Health Organization Pesticide Evaluation Scheme, CIB, Central Insecticide Board, BIS, Bureau of Indian Standards. Details of chemicals and alternate chemicals, small stock of antidote, no open baiting, periodicity of spraying chemicals. सो ये रेगुलरली हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई कौन सा केमिकल हम यूज कर रहे हैं, उसका एंटीडोट क्या होगा, उसका स्पिल कैसे करना है, उसका स्पिल हो जाए तो स्पिल को मैनेज कैसे करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये कोई किसी गलत आदमी के हाथ में ना लग जाए, तो इस बात का बहुत सिक्योरिटी वगैरह का बहुत ध्यान रखना। चलिए। Cleaning after floods. In the event of a flood, example overflow from system, toilet, and sewer, the area must be immediately assessed by infection control team to determine the risk of contamination. Until confirmed as a clean water source, all staff should assume that the water is contaminated. Immediate contamination may occur if the source of the flood water harbors pathogenic bacteria, example sewer or toilet overflow, and the area will need to be cordoned off until cleaning and disinfection are completed.
If the flooding involves a food preparation area, all food products that have come into contact with flood water must be discarded and public health notified. Public health must also be notified if vaccine refrigerators are involved in a flood or if flooding leads to a prolonged power outage that compromises food or vaccine refrigeration. तो बेसिकली अलग अलग तरीके के फ्लड आ रहे हैं। एक तो विद इन हॉस्पिटल आ सकता है कि ड्रेन जैम हो गया इस तरह से, कोई पाइप फट गया है। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम दैट कीप्स हैपनिंग। सो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो हमने पढ़ा है। स्क्रीन चला गया। हाँ, ओके। Ways to save on housekeeping operational costs without sacrificing patient care. Use fewer trash liners. A small but important practice to change in placing extra trash can liners at the bottoms of bins. Though in other types of facilities, this can serve as a time-saving practice for the janitorial crew in a hospital. Janitorial crew in a hospital, trash liners will be considered contaminated and have to be thrown away if any liquid leaks onto them. Since trash liners are a petroleum-based product, they become more expensive when the cost of oil rises, so the fewer you use, the better. तो बेसिकली अगर ट्रैश लाइनर्स जो होती है ना, मतलब जो एक आपने देखा होगा पॉलीथीन से बिछा देते हैं नीचे, डस्टबिन में पहले पॉलीथीन बिछा देते हैं, उसके ऊपर फिर सारा डालते हैं, फिर बाद में उस पॉलीथीन को उठा के ले जाते हैं बस, ठीक है। तो उसको ट्रैश लाइनर बोलते हैं। तो हम उनको कम कैसे यूज कर सकते हैं, हमें उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, इससे हम अपनी कॉस्ट। चलिए। Pack the right paper products. The key to lowering the cost of your paper products is to choose the right dispensing system and the right quality paper. Unbleached post-consumer recycled rolls are generally the most cost-effective for hands. Toilet tissue, on the other hand, is a totally different story. The question to ask is how comfortable do you want your customers to be? Softer paper require more virgin pulp and less recycled products and its production resulting in higher costs. ठीक है, जो पेपर है वो हमें अलग से यूज करना चाहिए, जो कि आसान, जिसमें कि कम खर्चा हो। नेक्स्ट। Use the right amount of cleaning chemicals. Dilution control machines allow you to accurately measure cleaning chemicals. Some cleaning chemicals can be very expensive, so controlling your chemical usage can have a major impact on your bottom line. Using the right amount of chemical can also help to ensure that you are effectively killing pathogens, which of course is essential in a hospital setting. If your disinfectant is overly diluted, pathogens will remain active and have the chance to build up an immunity. Contrary to what you might expect, if the chemical is too strong, it may end up simply washing over the pathogens without actually killing them. Chemical products are engineered to work at certain parts per million. Dilution control equipment can help cleaning agents clean more effectively and control your bottom line. So, हमें कितने केमिकल्स यूज करने चाहिए उसको हमें पता होना चाहिए, ठीक है। हमको ज्यादा केमिकल्स यूज करना चाहिए, कितना डाइल्यूशन होना चाहिए, मशीन रखनी चाहिए जो कि डाइल्यूशन कर सके, ठीक है। ओके। Avoid unnecessary linen laundering. The key here is to establish accurate par levels on each floor. A good way to estimate this is to set aside the same number of linen items as beds in the unit, along with an additional 10 to 15% of that number as extra. Deliver these in the morning and then check in every few hours to restock par levels as needed. The danger with having too much linen on a floor is that it can easily become contaminated, thus needing to be re-laundered before it is even used. Don't have more linen than is necessary out on the floor, and educate nursing staff on the importance of only taking what is actually needed or requested by the patient. तो अननेसेसरी लॉन्ड्रिंग है कि वे अननेसेसरी मतलब कपड़े हैं, उनको नहीं यूज करना चाहिए, उसको अलग रख देना चाहिए। हमें बहुत स्टॉक वगैरह कितना रखना चाहिए, हमने लॉन्ड्री वाले में पढ़ा था ये। ओके। Reduce your solid waste. Waste removal fees are assessed based on volume, usually around INR 5,000 per ton.
So it is important to reduce your solid waste as much as possible. A few steps to take. Establish a recycling program for cardboard, paper, metals, blue wrap, etc. Reduce your document destruction cost by only shredding paper with confidential information. The rest can go to recycling. Use a baler to pull out as much as cardboard as possible. Selling these bales back to your waste hauler can earn your earn you credits which can offset other waste removal cost. बेसिकली कैसे हमें रिड्यूस करना अपना सॉलिड वेस्ट, दिस इज वन वे। कार्डबोर्ड वगैरह को, पेपर को हमें रिसाइकलिंग प्रोग्राम में डालना चाहिए। Maximize each pool. Every time waste is removed, you pay a pool charge, generally about INR 7,000. So be sure you are getting the most bang for your buck. Monitor your waste stream for a few weeks and pay attention to how full containers are when they are pulled. Ideally, you want to fill your containers as full as possible without letting your trash sit for too long. For example, if you generate about 8 tons per week, you might want to consider having your waste pulled once a week. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। Reduce your biohazardous waste. A final way to reduce your waste removal expenses is to choose the most effective way of dealing with biohazards. Using an on-site treatment system such as autoclave steam sterilization process can help you avoid hefty removal fees. Avoid sending biohazardous waste through this type of unit. It can be thrown out along with the rest of your solid waste. This may not be a good option, however, where space is very limited as units tend to require a 10 by 12 foot space minimum. Educate nursing and other hospital staff on your efforts. Your EVS department may be doing a great job at reducing waste and efficiency, but if other hospital staff aren't made aware, they may be unintentionally thwarting your efforts. Communicate with directors and nursing staff so raise awareness about your cost-saving objectives and what they can do to help. Cleaning and disinfection in isolation rooms. Isolation rooms are specifically designed for patients requiring isolation due to contagious disease from being spread from a patient to other patients, staffs, and visitors, or from others to a particular patient. Another type of patient requiring isolation is immunocompromised patients, which have chances of acquiring secondary infections. So single bed isolation rooms are made for immunocompromised, whereas multi-bedded isolation wards are made and ward for patients with similar diagnosis like TB. Changes curtains after the discharge of all patients in case of a ward or every 15 days, whichever is earlier. Fogging to be carried out with 20% hydrogen peroxide disinfectant after discharge of each patient. Terminal cleaning with 5% hydrogen peroxide to be done at the end of each shift. A special transmission-based precautions, that is blood-borne pathogen isolation, BBP, airborne isolation, AI, droplet isolation, DI, and contact isolation, CI, have to be followed for patients having specific diseases. Cleaning and disinfection of emergency rooms and the intensive care units. All examination tables to be cleaned daily. Washable walls will be spot washed daily and as necessary using a specified disinfectant. Sinks, soap dishes, and paper towel dispenser will be cleaned daily and replenished. All stretchers, trolleys will be cleaned weekly. Toilets to be washed and cleaned at least thrice daily using germicidal solution, including both sides of toilet seats in case of English toilets. Emergency department is to be cleaned on a 24-hour basis, 7 days per week, and thoroughly cleaned as necessary. For cleaning a spray, the entire area with a mixture of 20% hydrogen peroxide, formaldehyde, and glutaraldehyde, Sidex, before a new patient is admitted. Change the curtains once in 7 days or as and when required. तो these are very self explanatory nature। ये इसी तरह स्लाइड्स इस तरह से बनी हुई है कि आप इन्हें पढ़ोगे तो खुद से समझ में आ जाएगा क्या लिखा। ठीक है। अच्छा, ये इसमें लिखा हुआ है कौन से मटेरियल को किसको साफ करना है और किस सोल्यूशन से साफ करना है, कैसे साफ करना है।
ये आप पढ़ लीजिएगा बाद में। Yes, sir. ठीक है। Cleaning and disinfection of laboratory. Laboratory area requires specific cleaning in different sections of the laboratory. Hematology and biochemistry section table tops should be cleaned with 1% sodium hypochlorite in the morning. Microbiology sections and histopathology sections should be disinfected after each shift so that a microbial culture is built. Microbial culture does not occur. Laboratory areas should be Dr. Vishaka, I can't hear you. Dr. Vishaka? Dr. Vishaka, we can't hear you. Akulata, can you start reading? I think Dr. Vishaka joined back. Yeah, hello. Yeah, go ahead, Dr. Vishaka. Cleaning and disinfection of laboratories. Hello. Yeah, Dr. Vishaka, go ahead reading. Go ahead reading, Dr. Vishaka. Hello. Yeah, please go ahead reading. I can hear you. Hello. Yeah, Dr. Vishaka, go ahead reading. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. There was a connection issue. No problem. All the dustbins shall be washed and lined with color-coded bags in the mornings. Change the waste bag when it is 2x3 filled with laboratory waste. Clean the walls thoroughly by using a specialized soap disinfected solution in the morning. The floor shall be thoroughly mopped with a disinfected solution. The common areas shall be swept and mopped in the morning at regular intervals to keep them clean. Contaminated clothing must be decontaminated before laundering. Replace soap and hand towel, alcohol-based and rub when required. Cleaning, cleaning and disinfection of outpatient department. Use 1% sodium hypochlorite for floor mopping. Wipe all the tabletops, examination table, dressing trolleys with 5% hydrogen peroxide. Spray the dental department with 20% hydrogen peroxide. Change all curtains once in a week. Change linen on examination table every day or as and when required. Remove trash from dustbins and change the trash liner every evening before closing hours. The offices shall be dry, dusted, and swept after the closing hours. The work tables to be cleaned with soap solutions in the mornings. The offices shall be mopped with soap solution in the morning. Staff restrooms, toilets to be cleaned using soap solution and kept odor-free using deodorizer. Change doctor coat and replace with new coat. Cleaning and disinfection of dressing room. Spray the entire room with 20% hydrogen peroxide daily in the evening. Clean all the tabletops with 5% hydrogen peroxide twice in each shift. Trolley to be kept clean at all the times. Wipe the top of dressing trolley with 5% hydrogen peroxide. Ideal method of private ward spraying. On discharge of patient, clear all the furniture from the room. Remove the bed linen, curtains, early morning disinfectant for spraying use in sprayer all over the room. Let it dry. Clean all the tabletops, window ledges, all fixtures, phones, chairs, and other furniture in the room with clean duster and 5% disinfected solution. Floors to be mopped with 1% sodium hypochlorite. Once all the surfaces in the room are dry, replace all the furniture back. Cleaning and disinfection of corridors. Place wet floor caution sign as at both
both ends of corridor to alert staff and visitors to a potential risk. Wait mop all corridor, covering only half of the width at a time. This allows safe foot traffic all the times. The patients can walk through the other half of the width and patient-related staff falls can be avoided. Wait mop the remaining half of the corridor only when the first half has dried completely. Cleaning disinfection of toilets. Wash hands and put on gloves. Ventilate the area, for example, open a window, and prepare the cleaning solution in a well-ventilated area. Refer to manufacturer's instructions. Flush the toilet with seat lid down. The toilet should be thoroughly cleaned at least once every shift and mopped dry. The floor should be made non-slippery and all deposits removed. Apply the cleaning agents to the inside of ball, including under the rims, and allow to soak and clean the ball afterwards. Flush the toilet. Rinsing the brush in flushing water, leave the toilet brush in the bowl. Remove any splashes or marks from the wall. Wipe the toilet seat and flush handle with the cloth and then closing the lid. Dispose of the cloth when the task is completed. Remove gloves and wash hands. In addition to the stipulated timing, sweepers shall be undertake such sweeping, cleaning, mopping operations as when required or as directed by the housekeeping supervisor, nursing staff on duty, or personnel as may be authorized in this regard by the superintendent at any time of the day and night. The outlets and drain pipes of the urinal should be kept clog-free and fixed in proper place. The clogged drain pipes are to be declogged immediately and drain chambers cleaned thoroughly once a week as part of preventive maintenance, and also one register to be maintained for all the drainages of the hospital. Regular monitoring to be done by the housekeeping supervisor for the cleaning by maintaining and filling the checklist. In case of Indian toilets, apply the cleaning agents to the inside of ball, including under the rims, and allow to soak and clean the ball afterwards. Flush the toilet, rinsing the brush in flushing water, then cleaning the foot pedals with disinfectant and let dry. Cleaning steps should be similar except for the cleaning of the foot pedals. Ideal procedure for spill management. Wear personal protective equipment, gloves only in case of minor spill, apron, mask or major spill to avoid before cleaning the spillage. Cover the area with chloride, bleaching powder, chalk powder to soak the spillage. Leave it for 20 minutes. Collect the residue with newspaper or cardboard. Wipe and discard all the waste in disposable bag. Disinfect the entire spill area with a hospital-grade disinfectant and allow it to stand for the amount of time recommended by the manufacturer. Mop the spillage using disposable cloth or wipes until the area is visibly clean. Remove the gloves and discard in the same bag. Tie the bag properly and pull label with the type of spillage. Put label. Wash the hands properly. Fill incident form and submit. Note, if spill contain broken glasses and there is a risk of sharp injuries, first disinfect the spill with 1% sodium hypochlorite solution, and after 20 minutes, put broken glass pieces in the sharp containers and then proceed further to wipe the spill. Management of lost and found items in hospital. In order to protect any article inadvertently left or lost by a patient, visitor to the hospital, it can be deposited safely safely so that it can be handed back by the housekeeping supervisor. A procedure for lost and found is very essential. When an article is found, finder to immediately report to housekeeping supervisor. The housekeeping supervisor to enter details in his lost and found register. A unique serial number generated form is attached to the item with details of date, name of the ward, room number, location, patient name if found in the room, and name of finder. Forwarding address is obtained by IP admission. The housekeeping supervisor may contact the patient to either claim it or for further instructions. When claim is made, detailed description of the article is verified
before handing over. The claimant signature is taken as acknowledgement on the recipient generated through lost and found module. Ideal method of management of pest control. Management of pest control is vital to eradicate pests like rats, flies, mosquitoes, lizards, and silverfish and termites from hospital premises. Pest control is an activity which is given out on contract to a company specializing in the field. Their scope of work is as follows. Pest control services including all related and connected devices such as fly control, household disinfestation, rodent control measures, vector control, fogging, fumigation in respect of all the areas as specified by the company meeting best cleanliness standards and maintaining it all times. Area covered includes entire premises and precincts thereof and any other area indicated by the management as per agreed schedule and specifications. Starting from one side, all areas have to be spread as per terms and conditions maintained in the contract as per MOU. Every evening pest control book to be checked by the pest control in charge housekeeping supervisor as per pest control daily schedule. Equipments and chemicals are to be provided by the contractor as per MOU. Clearance of bill is subjected to the pest-free premises of entire building as per quality standards as per schedule. Any complaint received from area and lodged in a complaint format. That's on the next slide. So, Date. please. Yes, sir. Date, type of complaint, area, complaint given by, given to, received time, time complaint attended, measures taken, housekeeping supervisor, pest control supervisor sign, company supervising. ओके तो ये जो है ना ये आई थिंक ये बहुत ही जनरल चीज है आई थिंक जो हमने इसको कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ लिया है इसको क्या क्या चीजें इसके अंदर होती हैं अब इसमें कुछ बताने वाला नहीं है कि भैया उसको ऐसे साफ करना है वैसे साफ करना है बट ये पता होना चाहिए कितनी बार साफ होना चाहिए एंड ऑल दैट ये आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सी चीज में किसको कैसे साफ करना है तो ये पूरा वी हैव thoroughly and comprehensively understood this thing. नाउ हमने अलग अलग तरीके के ये भी देख लिए कि कौन कौन से टाइप के इक्विपमेंट्स यूज होते हैं हॉस्पिटल के अंदर और अलग अलग तरीके की हमने हाउसकीपिंग भी देख ली है स्टाफिंग भी देख ली है सबके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी पढ़ लिए हैं हमने स्पिल मैनेजमेंट भी पढ़ लिया है पेस्ट कंट्रोल भी पढ़ लिया है और हमने डिटेल्स में काफी डिटेल में डिस्कशन कर लिया ठीक है एनी डाउट और शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट ओके कैन यू सी दिस Yes, sir. ओके तो नेक्स्ट चीज क्या है हमने इन्फेक्शन कंट्रोल पढ़ना था इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी तो मैं सोच रहा था कि उसके बारे में क्या पढूं तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ मैं यूजुअली एनएबीएच की क्लासेस लेता हूँ तो पूरा एनएबीएच डिटेल में पढ़ाता हूँ उसमें से एक चैप्टर है ये तो मैंने सोचा कि मैं इसको यहीं से ही कवर कर देता हूँ इसी बहाने आपको एनएबीएच के चैप्टर्स भी पता चल जाएंगे हाँ, और क्या है ओवरऑल हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल का तरीका ही पता चल जाएगा कि कैसे मेंटेन करना होता है ठीक है चलो हम एक एक स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे इसके एक एक स्टैंडर्ड जितने भी हैं सब पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे ओके चलो प्लीज गो अहेड HIC at a glance. Infection control. Intent of the chapter: reduce and eliminate infection risk, facilitate resources to support infection prevention, monitoring of antimicrobial use, surveillance activities, disinfection, sterilization activities, biomedical waste management. तो हमें इस Infection. पूरे HIC के जो चैप्टर है इसमें ये सारी चीजें देखनी है इन्फेक्शन का रिस्क कैसे कम हो और रिसोर्सेज जो है कौन कौन से चाहिए होंगे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए एंटी माइक्रोबियल यूसेज एंटीबायोटिक्स की जो यूसेज होती है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए क्योंकि हमारे साथ एक प्रॉब्लम डेवलप हो रही है रेजिस्टेंस की है ना सर्वेलेंस एक्टिविटीज कैसे कैसे की जानी चाहिए डिसइंफेक्टेड एंड स्टरलाइजेशन एक्टिविटी जो भी हमने पढ़ी थी वो कैसे की जानी चाहिए वो यहाँ पे कवर होगा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का थोड़ा सा क्वेश्चन कवर होगा नाउ ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं
8 स्टैंडर्ड्स हैं। अब हम इन्हें एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सो पहला स्टैंडर्ड है, यस प्लीज गो अहेड। The organization has a comprehensive and coordinated hospital infection prevention and control program and aimed at reducing eliminating risk to patients, visitors, and providers of care and community. ठीक है, तो बोला ये हमारा पहला स्टैंडर्ड है, जिसके अंदर अब हमारे सब स्टैंडर्ड्स हैं। ये जो कोर ए लिखा हुआ है, ये सब स्टैंडर्ड है, ये हमारा मतलब इसके नीचे आता है। The hospital infection prevention and control program is documented, which aims at preventing and reducing risk of healthcare associated infections in the hospital. Infection control manual. Reference में WHO guidelines, CDC guidelines, and manual for control of hospital associated infections, standard operative procedures by NACO, Ministry of Health and Family Welfare, Government तो of India. बेसिकली हर हॉस्पिटल का अपना एक हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम होना चाहिए। तो अब कोई पूछेगा कि हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम कहाँ से बनाए सर हम, तो उसके लिए इलेक्शन कंट्रोल मैनुअल बनाओ। तो मैनुअल कहाँ से बनाए? मैनुअल के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं WHO गाइडलाइन से, CDC गाइडलाइन से, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन से, NAC की गाइडलाइन से। ठीक है। HIC 1A Documented Infection Prevention and Control Program aims at preventing and reducing risk of healthcare associated infections. The hospital infection prevention and control program is reviewed based on infection control assessment tool. Cleanliness and general hygiene of facilities will be maintained and monitored. Management commitment, infection control committee, infection control team. Awareness of the employees and infection control protocol implementation. ठीक है, तो ये क्या क्या चीजें आएंगी इसके अंदर हमने ये देख लिया है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। Core B. The hospital infection prevention and control programs identifies high-risk activities and has written guidance to prevent and manage infections for these activities. So ये कह रहा है कि पहले तो हमने क्या देखा, फर्स्ट में क्या देखा हमने कि भाई एक कोई हॉस्पिटल इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल का कोई प्रोग्राम होना चाहिए। ठीक है। सेकंड में क्या कह रहा है ये कि हमें हाई रिस्क एक्टिविटीज को आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनके लिए भी एक प्रोग्राम होना चाहिए। अब बात ये आती है कि हाई रिस्क एक्टिविटीज क्या होती है, तो आगे पढ़ो। Activities include performing aerosol generating procedures, handling blood and body fluid spills, specimens and SARPs, and exposure to contaminated medical devices, equipments, and biomedical waste. तो ये क्या हो गया, हमारी हाई रिस्क एक्टिविटीज हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। इसके लिए अलग से हमारा प्रोग्राम डेवलप होना चाहिए। Core C. The infection prevention and control program is reviewed and updated at least once in a year. That identifies opportunities for improvement based on new updates and trends of infection prevention and control. हर साल हमारा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम एक बार अपडेट किया जाना चाहिए। तो जो भी उस साल में कोई नई डेवलपमेंट हुई है या कुछ भी हुआ है, तो उसको अपने अपने प्रोग्राम जो इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल बनाया उसके अंदर अपडेट करना पड़ेगा आपको रेगुलरली उसको। तो ये कोर डी है या ए क्या लिखा हुआ है? देखो ये ना स्टैंडर्ड्स 4 तरीके के होते हैं। एक होता है नीचे रेड में देख रहे हो आप, कोर। उसके बाद Yes, sir. ब्लू में कमिटमेंट, ए से अचीवमेंट, ई से एक्सीलेंस। तो जब भी एनएबीएच का जो वो होता है मतलब असेसमेंट होता है, तो वो कोर एंड कमिटमेंट, ये सी कोर एंड कमिटमेंट, ये दोनों उन्हें वो चेक करते ही करते हैं। मतलब जब वो असेसमेंट करते हैं तो वो ये तो चेक करेंगे करेंगे। ए वाले को ये क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम बाद में चेक, आपको करके रखना है, बाद में हम चेक करेंगे। ठीक है, हम बाद में कभी भी आ सकते हैं चेक करने के लिए। और ई वाले स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं कि भाई अभी आपने कोई नहीं करा, कोई बात नहीं, जब नेक्स्ट टाइम आप अपना री एक्रेडिटेशन कराए 5 साल बाद 4 साल बाद में, तब क्या है आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। आगे समझ में? तो Yes, sir. ये जो आप कोर पढ़ रहे थे ये कमिटमेंट है। देखो कोर वाला सिर्फ ये है, कोर ए लिखा हुआ है, बाकी ये दोनों सी है कमिटमेंट वाले। कमिटमेंट ए मतलब अचीवमेंट। प्लीज गो अहेड। The infection prevention and control program is reviewed based on infection control assessment tool. Reference में infection prevention and control assessment tool as per WHO and CDC at facility level and acute care hospitals.
तो हमारा जो इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल आईपीसी प्रोग्राम है, आईपीसी प्रोग्राम जो है इज रिव्यूड बेस्ड ऑन, बार बार इसको रिव्यू किया जाता है, इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल के ऊपर बेस्ड होता है ये। अब ये इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल क्या है, ये है, ठीक है, ये है कि भाई अब आप इसको पढ़ भी सकते हैं वरना आप इसको बाद में भी देख सकते हैं, चलो पढ़ लो एक बार इसको ना। Acute care hospitals, three domain of assessment: infection control program and infrastructure, infection control training, competency and implementation of policies and practices, hand hygiene, personal protective equipment, prevention of catheter associated urinary tract infection, CAUTI, कॉटी, prevention COTI, prevention of central line associated bloodstream infection, क्लैप्सी, CLAB, CLABC, prevention of ventilator associated event, VAE, injection safety, prevention of surgical site infection, prevention of Clostridium difficile infection, CDI, environmental cleaning, device reprocessing. अब देखो, अब मेरे को अगर किसी हॉस्पिटल की ये आइडेंटिफाई करनी है कि उन्होंने अच्छे से कुछ किया है या नहीं किया है, तो मैं कैसे करूंगा आइडेंटिफाई कि अच्छे से क्लीनिंग करी है या अच्छा सा हॉस्पिटल में हो रहा है, तो कि कितनी बार हैंड हाइजीन हो रहा है, पीपी कितने प्रेजेंट है और कितने यूज हो रहे हैं, कितने पेशेंट्स को क्लैपकॉटी हो रहा है, कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, कितने पेशेंट को क्लैप्सी हो रहा है, कितने पेशेंट को वीएई हो रहा है, कितने पेशेंट को सीडीआई हो रहा है, कितने पेशेंट को एसएसआई सर्जिकल साइट इन्फेक्शन हो रहा है। तो इससे मैं ये पता कर सकता हूँ कि हमारे हॉस्पिटल में किस तरह की हॉस्पिटल की क्लिनिक है, ये असेसमेंट टूल है, ठीक है। जैसे कि सपोजिटली आप एक अच्छे मतलब एक नर्स जो है, एक अच्छी नर्स है, उसकी नर्सिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, तो हम ये कैसे असेस कर सकते हैं उसकी, ऐसे असेस कर सकते हैं कि भाई वो ये तो कितनी बार है, एक बार प्रिक करती है या 10 बार प्रिक करती है, तब जाके उसको वेन मिलती है, ठीक है। तो अगर वो 10 बार प्रिक करती है तो उसकी उसकी एफिशिएंसी और कॉम्पिटेंसी उतनी अच्छी नहीं है ना। और वो एक ही बार करती है और एक ही बारी में हो जाता है काम, तो ऑब्वियसली इट इज कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर, ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे ही हम कोई हॉस्पिटल अच्छा इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल प्रोग्राम कर रहा है, उसका कैसे पता कर सकते हैं, इन तरीकों से पता। समझ में आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल, ओके गो अहेड। The organization has a multidisciplinary infection control committee which coordinates all infection prevention and control activities. The committee shall lay down standard operative procedures to guide the implementation. At least monthly meetings shall be conducted with minimum quorum required. Minutes of meetings shall be documented. ठीक है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी होनी चाहिए, मतलब डॉक्टर्स भी होने चाहिए, नर्सेस भी होने चाहिए, फार्मेसी वाला भी होना चाहिए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से भी होना चाहिए, मेंटेनेंस से भी होना चाहिए, हाउसकीपिंग से भी होना चाहिए, हर डिपार्टमेंट से होना चाहिए। चलिए, Committee members में doctors, surgeons, infectious disease specialist, microbiologist, infection control nurse, laboratory staff, housekeeping, pharmacy staff, administrative staff. Goal: to reduce hospital-acquired infections to a minimum, to provide a safe environment for patients, employees, and visitors through prevention, control, and surveillance, identification of hospital and community-acquired infections. समझ में आ गया इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या, कौन कौन कमेटी मेंबर्स है, क्या क्या गोल है, ये सब पता चल गया हमको। The organization has an infection control team which coordinates implementation of all infection prevention and control activities. The ठीक है, team इस बारे shall में हमने बात कर ही ली है कि भैया एक हॉस्पिटल एचआईसीसी होनी चाहिए और वही उसमें उसको काम करेगी। कमिटी क्या होगी, सजेशंस देगी, ये सब बताएंगे, पॉलिसी बनाएंगे ये सब लोग, ठीक है, पॉलिसी बनाएंगे कैसे कैसे किया जाना चाहिए, कौन कौन किया जाना चाहिए। इसके लिए टीम होगी जो पॉलिसी में इन्होंने बनाया है उसको फॉलो करने के लिए, ठीक है, वो टीम होगी। उसमें कौन होगा, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होगी, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर होगा, ठीक है, पढ़ो। the team shall represented HICC comprise of infection control officer and infection control nurse responsible for day-to-day function of IPC, surveillance activities and audit. चलो पढ़ो। The hospital has
The hospital has designated infection control officer as part of the infection control team, preferably a microbiologist who is knowledgeable in infection control practices. If not, a surgeon physician can be designated. The organization ठीक has है, designated infection control nurses as part of the infection control team. Should be a registered nurse, GNM, BSc, responsible for surveillance of health care associated infection and compliance monitoring. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. The organization implements information, education, and communication program for infection prevention and control activities for the community. Create awareness to the community based on infection prevention and control activities. The organization participates in managing community outbreaks. It includes internal and external communication, roles and responsibilities for staff and training of the staff. मतलब सिंपल सी बात है कि इनफेक्ट सबको बताना है हैंड हाइजीन कैसे करना है, फोटो लगनी होती है. जैसे आपने अभी स्पिल मैनेजमेंट में देखा होगा, वो लेडी अपने हाथ को 7 टाइप्स पे धो रही थी, पीपी यूज कर रही थी. तो ये क्या है, इसमें बताया जाता है कि किस किस तरह से किया जाना चाहिए. और कोई भी मैनेजमेंट अगर होता है, अगर जैसे कोविड आया था, तो हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मैनेज करना. I see too. The organization provides adequate and appropriate resources for infection prevention and control. Core A, the management makes available resources required for the infection control program. The organization earmarks adequate funds from its annual budget in this regard. Adequate and appropriate personal protective equipment, soaps and disinfectants are available and used correctly. अच्छा, तो बेसिकली क्या कह रहा है कि टॉप मैनेजमेंट को हर साल उनको रिसोर्सेज देने चाहिए, एक बजट अलग से बना के रखना चाहिए. ईयर मार्क्स मतलब अलग से ये बजट तो सिर्फ हाउसकीपिंग इन्फेक्शन कंट्रोल एक्टिविटीज के लिए ही यूज होगा. ठीक है, कि भाई एडिक्वेट नंबर ऑफ पीपी होने चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ सब कुछ एडिक्वेट नंबर का होना चाहिए. एडिक्वेट यूज ऑफ पीपी हमने उस वीडियो में देख लिया है. इसको आप, मैं पीपीटी शेयर करूंगा तो आप देख लेना. Core D, adequate and appropriate facilities for hand hygiene in all patient care areas as accessible to healthcare providers. Facility of hand-free tap for hand washing, hand rub dispenser, soap, and hand dryer in a convenient areas. Achievement में आ रहा है. Isolation barrier nursing facilities are available. Separation of ill person who has a communicable disease, example measles, chickenpox, mumps, SARS, from those who are healthy. Nursing a patient with infectious diseases in isolation to prevent the spread of infection. तो बैरियर नर्सिंग करते थे हम पहले. ठीक है, अगर कोई पेशेंट आइसोलेशन, अब तो आइसोलेशन रूम में डालते थे, लेकिन बैरियर नर्सिंग भी करते थे. तो क्या करते हैं बैरियर नर्सिंग में, वो देख लेते हैं. पढ़ो. Hand hygiene, PPE, decontamination, waste management, linen and laundry, patient transport, patient placement. अच्छा, ये नेगेटिव प्रेशर रूम और पॉजिटिव प्रेशर रूम क्या होता है, आपको पता है, आइडिया है? व्हाट इज नेगेटिव प्रेशर रूम, व्हाट इज पॉजिटिव प्रेशर रूम? Negative pressure room where there will be no oxygen. अच्छा जी, देर भाई, तो जिंदा कैसे रहेगा आदमी अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगा तो? मतलब वहाँ पे जो बेसिकली जो एयर है, मतलब that is like it's a process where like somewhat similar to the negative pressure wound healing के process के जैसा है. नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. सुनो, सिंपल सी वहाँ बात से है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर नहीं जा सकते नेगेटिव प्रेशर में. सुनो मेरी बात, ठीक है. नेगेटिव प्रेशर रूम कैसा होता है? एक कॉरिडोर होता है, आप इमेजिनेशन करो, एक कॉरिडोर है, कॉरिडोर के साथ में एक रूम है. ठीक है, तो हवा अगर कॉरिडोर से आके उस रूम के अंदर आके, कॉरिडोर से रूम में हवा आ रही है और फिर हवा बाहर चली जाती है, खिड़की से बाहर चली जाती है, दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव प्रेशर रूम. ठीक है. पॉजिटिव प्रेशर रूम में क्या होगा कि हवा बाहर से आ रही है, रूम के अंदर आ रही है, और रूम की हवा जो है बाहर जा रही है, तो रूम की हवा जो है वो कॉरिडोर में जा रही है. दिस इज अ पॉजिटिव प्रेशर रूम. अब इसमें होता क्यों है नेगेटिव प्रेशर रूम? कोविड के टाइम पे क्या था मतलब लोगों को कोविड से खतरा था, तो मतलब कोविड से खतरा था, अगर हम उसे पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखते, ऐसे रूम में रखते,
जहाँ की हवा कॉरिडोर में जाती और कॉरिडोर में दूसरे हवा दूसरे एरिया में भी दूसरे रूम में भी जाती, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं उससे, है ना। तो इसीलिए कोविड पेशेंट को नेगेटिव प्रेशर रूम में रखा गया। पॉजिटिव प्रेशर रूम मतलब एनी पेशेंट जिसको की जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है जैसे, तो लेकिन बाहर से अगर जरा से भी कोई इन्फेक्शियस मटेरियल आ गया अगर, ठीक है, बाहर कॉरिडोर से, तो वो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे पेशेंट्स को हम पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखते हैं कि मतलब वहां से इन्फेक्शन बाहर ना जाए उसको, मतलब उसका इन्फेक्शन बाहर चला जाएगा तो क्योंकि वो खुद इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसलिए पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखते हैं। समझ में आ गया? ऐसा कुछ नहीं है कि भैया ऑक्सीजन कम होता है उसमें। तो एक बार फिर से, नेगेटिव प्रेशर रूम मीन्स लाइक बाहर से कॉरिडोर से एयर हवा आया। आ रही है, कॉरिडोर से हवा ओके। आएगी और उस हाँ हाँ रूम के अंदर जाएगी और हाँ हाँ रूम से वो हवा बाहर चली जाएगी हाँ। एनवायरनमेंट में, खिड़की से दैट इज क्रॉस वेंटिलेशन। बाहर। दिस इज नेगेटिव प्रेशर रूम, ठीक है, दिस इज नेगेटिव प्रेशर रूम। क्रॉस वेंटिलेशन का मतलब है कि दोनों साइड से ये काम हो सकता है, ठीक है, दोनों साइड से। अगर दोनों साइड से ये काम होगा, बाहर से हवा अंदर आ रही है और अंदर से कॉरिडोर में जा रही है, तो जो पेशेंट का जो इन्फेक्शियस सराउंडिंग है, जो बैक्टीरियाज और वायरसेस जो उसके एयर में है, वो भी कॉरिडोर में चले जाएंगे साथ में, तो दूसरे पेशेंट को ओके। भी इन्फेक्ट कर देंगे वो, है ना। हाँ सो वो हाँ। तो तुम कह रहे हो वो दो वाइस वर्सा होता है, हमें वाइस वर्सा नहीं करना है, सिर्फ ऐसा ऐसा थोड़ा सा एरिया क्रिएट करना है, ठीक है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है कि बाहर से ही हवा अंदर आए, अंदर से बाहर हवा ना जाए, अंदर से कॉरिडोर में हवा ना जाए किसी भी सूरत। ओके, मतलब बाहर से हवा आए अंदर होके हाँ, फिर उसके बाद बाहर दूसरी जगह से। हॉस्पिटल के खिड़की से बाहर निकल जाए, ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है ना। और क्योंकि देखो आप कोविड का पेशेंट होगा, कोविड का पेशेंट ऐसी जगह हम्म बैठा होगा, आप समझ पा हम्म रहे हैं, हम्म हम्म कोविड का पेशेंट ऐसी जगह बैठा होगा तो क्या दिक्कत है, मतलब बाहर से हवा आ रही है तो वो बाहर वाले जो कॉरिडोर में अगर हवा चली जाएगी उसी के ड्रॉपलेट्स वगैरह चले ड्रॉपलेट्स जाएंगे, वगैरह हाँ, चले ट्रैवल जाएंगे तो फिर कर। दूसरों को इन्फेक्ट कर देंगे वो तो। ओके 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 समझ ओके में आ ओके। गया नेगेटिव प्रेशर रूम और पॉजिटिव प्रेशर रूम। ठीक है, और इट इज पॉजिटिव में नॉट। ये है। हाँ, पॉजिटिव में सर मतलब एक बार पॉजिटिव में क्या ये। है कि बाहर से हवा आई, क्योंकि हाँ पेशेंट हाँ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर इस हाँ पेशेंट का कोई इन्फेक्शियस मटेरियल बाहर चला भी जाएगा हाँ हाँ। तो मतलब वो इन्फेक्शियस मटेरियल दूसरों को इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हम्म ऐसा पेशेंट जो है ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। दूसरी बात, हम्म बाहर वाले का कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन अगर आ गया कॉरिडोर से अंदर, तो वो हम्म पेशेंट जो है वो तो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो जरा सा इन्फेक्शन हम्म भी उसको बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसे पेशेंट्स को हम हम्म इनको पॉजिटिव प्रेशर रूम में रखते हैं। आई बात समझ में? हम्म। इज इट क्लियर? Yes, sir. जी सर। ये नेगेटिव प्रेशर रूम हो गया, ये पॉजिटिव प्रेशर रूम हो गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना, ये कॉरिडोर से बाहर आवाज आ रही है, ठीक है। ये बेसिकली सप्लाई जो है ऊपर से सक करता है, एनवायरनमेंट से सक करता है ये, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये दिखा रखा है कि भाई यहाँ से एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर भी जाती है, पर अल्टीमेटली ये जो सप्लाई आ रही है, ये जो सप्लाई आ रही है, ये सप्लाई कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है, मतलब एनवायरनमेंट से आ रही है अल्टीमेटली। अल्टीमेटली बाहर से आ रही है ये हवा, ठीक है। और ये कहाँ जा रही है? कॉरिडोर से बाहर जा रही है ये, ठीक है। ओके। HIC 3, 3A. 3A. The organization implements the infection prevention and control programs in clinical areas. 3A में organization adheres to standard precautions, perform hand hygiene, use personal protective equipment whenever there is a expectation of possible exposure to infectious material, follow respiratory hygiene cough etiquette principle, ensure appropriate patient placement, properly handle and properly clean and disinfect patient care equipment and instruments devices, clean and disinfect the environment appropriately, handle textiles and laundry carefully, follow safe injection practices, wear a surgical mask when performing lumbar punctures, ensure healthcare worker safety including proper handling of needles and other sharps. नीडल्स के और शार्प्स के लिए हम अभी हैंडलिंग देखेंगे। ये बेसिकली बता रहे हैं हर हॉस्पिटल में ये सब चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये हैंड हाइजीन कैसे किया जाना चाहिए उसका ये तरीका है, आई थिंक आप सबको आता होगा ये, अदरवाइज आप चेक कर लीजिएगा यहाँ पे।
हैंड स्क्रबिंग, स्क्रबिंग कैसे होती है, हाथ में सर्जिकल स्क्रबिंग कैसे होती है, वो आप चेक कर लीजिएगा। गूगल, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे वीडियो। ये है 5 पॉइंट्स ऑफ हैंड हाइजीन, ठीक है, हॉस्पिटल को फॉलो करना चाहिए। बिफोर टचिंग अ पेशेंट, बिफोर क्लीनिंग एन एसेप्टिक प्रोसीजर, आफ्टर बॉडी फ्लूइड एक्सपोजर रिस्क, और आफ्टर टचिंग द पेशेंट एंड आफ्टर टचिंग द पेशेंट सराउंडिंग। ये जब भी पॉइंट होता है ऐसे हमको हैंड हाइजीन करना है, ठीक है। प्लीज रीड इट। Social hand washing 10 to 30 seconds के लिए होगा. Medical hand washing, hand rub 20 to 30 seconds. Hand wash 40 to 60 seconds. Surgical hand washing 3 to 5 minutes. Antiseptic used, hand rub chlorhexidine 0.5% in an alcohol base. Hand washing for medical and surgical hand washing, chlorhexidine 4% in a soap base. ठीक है, अच्छा, ये हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं पहले। द ऑर्गेनाइजेशन एडहियर्स टू ट्रांसमिशन बेस्ड प्रिकॉशंस। तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस में हमें मतलब कैसे कैसे करना चाहिए, एयरबोर्न। चलो पढ़ लो आप इसको, फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट पढ़ लो आप इसको। The organization adheres to transmission-based precautions. 1. Contact isolation precautions. Infectious diseases or multiple resistant microorganisms that are spread by close or direct contact. Private लो, and spread through air by directly or indirectly. N95 mask, private room, negative pressure, 6 to 12 air changes per hour. Universal blood and body fluids precautions. Blood-borne body fluids pathogens, blood, semen, vaginal secretions, CSF, synovial fluid, pleural fluid, peritoneal fluid, and pericardial fluid, amniotic fluid, and tissues. इसमें gloves, mask, and protective eye gears, gown, contaminated needles should be recapped. शुड Use नॉट puncture बी, resistant. शुड Should नॉट बी not be. रिकैप्ड। मतलब क्या है, एक बार आपने इंजेक्शन लगाया किसी को, तो उसको उठा के एज इट इज किडनी ट्रे में रख देना चाहिए, उसको रिकैप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिकैपिंग में बहुत बार हेल्थ केयर प्रोफेशनल Puncture. को सुई चुभ जाती है, Use उसको puncture नीडल स्टिक resistant. इंजरी हो जाती है। Yes, sir. Use puncture resistant containers for used needles and other sharp items. ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एक ये स्टैंडर्ड भी है कि सेफ इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन प्रैक्टिसेस कैसे की जानी चाहिए। पढ़िए। The organization adheres to safe injection infusion practices. Aim is to prevent needle stick injury. One needle, one series, only one time. Proper waste segregation and disposal of sharps. Timely line changes. IV site monitoring. Aseptic precautions. Rub-hub rule. Yeah. 3 things you need to know about injection safety. Needles and syringes are usually single-use devices. They should not be used for more than one patient or reused to draw up additional medications. Do not administer medications from a single dose vial or IV bag to multiple patients. Limit the use of multiple dose vials and dedicate them to a single patient whenever possible. ये मल्टीपल डोज वायल्स पता है आपको क्या होता है? मल्टीपल डोज वायल्स, एमडीवी, एनी आइडिया? ज्यादा कैपेसिटी वाले वायल्स जिसमें ज्यादा क्वांटिटी होता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक ही वायल होती है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर सोल्यूशन होता है और उसी से बार बार लेते हैं। जैसे क्या है, जैसे आई एम अ डेंटिस्ट, तो आई नो कि हम ना जब टूथ एक्सट्रैक्शन करते थे तो एक लिग्नोकेन की एक बॉटल होती थी, उसी बॉटल में से हम बार बार उसको निकाल के पेशेंट्स पे लगाते रहते थे। मतलब इंजेक्शन अलग होता था, लेकिन उसी को यूज करते थे बार बार हम लोड करने के लिए। दिस इज कॉल्ड, मतलब एक ही वायल जो है 500, मतलब सपोज करो, जैसे आप इसको ये भी देख सकते हो, जैसे हैंड वॉश है, हैंड वॉश इज अ मल्टीपल डोज वायल, ठीक है। आपको ये तो है नहीं कि सिर्फ आप ही हाथ से हैंड हाइजीन करोगे, कोई दूसरा भी कर सकता है उससे, है ना। सो ये एक तरह के मल्टीपल डोज वायल हो गए। अगर कोई पेशेंट को चीज लगानी है और बार बार उसको कोई यूज कर, उसमें से निकाल के यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल डोज वायल। तो ये कह रहा है कि लिमिट करो जितना हो सकता है मल्टीपल डोज वायल्स को।
चलिए, तो इन्फेक्शन सेफ्टी चेकलिस्ट का पूरी चेकलिस्ट है यहाँ पे, यू कैन गो थ्रू इट लेटर, प्लीज गो अहेड। An appropriate antimicrobial usage policy is established and documented. Antimicrobial usage policy identify clinical conditions with uses of appropriate antimicrobial, example antibiotic, antiviral, antifungal, and antiparasite. Monitoring of antimicrobial susceptibility based on culture sensitivity. List of restricted antimicrobial agents. ठीक है, ये देखिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंडिया के अंदर में, वर्ल्ड के अंदर हो रही है। एक टाइम आने वाला है जब लोग कॉमन कोल्ड से मर जाएंगे, नॉर्मल जुकाम हो जाएगा उससे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक जो है सब क्या बोलते हैं, ये जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होते जा रहे हैं। चलिए, The organization implements the antimicrobial usage policy and monitor rational use of antimicrobial agents. Monitoring rational use of antimicrobials के लिए the correct drug administered by the best route in the right amount at optimal intervals for the appropriate period after an accurate diagnosis. तभी यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं यूज करना चाहिए। The organization implements an antibiotic stewardship program. क्या होता है ये Antibiotic एंटीबायोटिक स्टewardship प्रोग्राम? अब हम पढ़ लेते हैं। is a set of commitments and activities designed to optimize the treatment of infections while reducing the adverse events associated with antibiotic use. Antibiotic Stewardship Program (ASP) is a multidisciplinary approach that includes infection control officer, clinical microbiologist, clinicians, clinical pharmacist, nursing staff, infection control nurse, laboratory staff. ठीक है, ये हमारा एंटीबायोटिक स्टewardship प्रोग्राम में है। ठीक है, चलिए। The organization has appropriate engineering controls to prevent infections. तो हमें इंजीनियरिंग कंट्रोल हमारा ठीक से होना चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन बचा सके। जैसे कि एयर चेंजेस को अगर हम कंट्रोल करें, या हम एचवैक सिस्टम को, एचवैक की फुल फॉर्म मैंने बताई थी, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम प्रॉपरली करें, उसको यूज करें, तो हम इन्फेक्शन बचा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये इंजीनियरिंग कंट्रोल। The organization has appropriate engineering controls to prevent infections. अच्छा, ये HIC4 आ गया. Engineering controls for स्पेशलिटी ओटी। OT. Air is fed to OT sterile areas to separate AHU. AHU क्या होता है? नहीं पता सर. अरे AHU एयर हैंडलिंग यूनिट। अच्छा, ओके, यस सर. ठीक है, AHU हॉस्पिटल में जाओगे हर जगह AHU लिखा रहता है। Yes sir, yes sir. हाँ, The air is pre-filtered to 10 microns and then to 5 microns with aluminum SS304 frame in AHU and pass through ducts to OT. Terminal HEPA filters, ceiling mounted of 0.3 microns, are used to filter the air. Air velocity 25 to 35 feet per minute with positive pressure at 2.5 Pascal. Use of laminar hoods that streamline filtered airflow directed at the OT table. Room temperature to be maintained 21 to 24 degrees Celsius. Relative humidity to be maintained 20 to 60%, ideally 55%. The fresh air component of air change is required to be minimum 4 air changes out of total minimum 20 air changes. तो ये सुपर स्पेशलिटी ओटी के लिए ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती है। ऐसे ही जनरल एंड ऑप्थेल्मिक और बेसिक ओटी के लिए बताया हुआ है। ठीक है, तो ये हमको पढ़ लेना है। तो चलो आप देख लेना इसको बाद में आगे। Core B, the organization designs and implements a plan to reduce risk of infection during construction and renovation. मतलब जब हॉस्पिटल के अंदर एकदम से कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन का काम हो रहा हो, ठीक है, तो कैसे इन्फेक्शन कंट्रोल, प्रिवेंशन कंट्रोल करना है। देखो, जो हमने इससे पहले तीनों स्टैंडर्ड्स पढ़ लिया ना, मेजरली हमारा कवर हो गया है। अब ये स्टैंडर्ड्स की बात करती है, तो हम इनको स्किप कर देते हैं। ये वाला ना, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है, बायोमेडिकल वेस्ट का हम देख लेते हैं। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल के हिसाब से वो बता देता हूँ। ठीक है, चल। Biomedical waste is handled appropriately and safely.
The biomedical waste classification and segregations would be done as per the BMW Management and Handling Rules 2016. Waste generated during the diagnosis, treatment, or immunization of human beings or animals or research activities pertaining thereto, or in the production or testing of biological or in health camps. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये भी पढ़ा होगा कि हमारा 85% नॉन हैजार्डस वेस्ट होता है, 10% इफेक्टिव होता है, 5% नॉन इन्फेक्शियस होता है। तो हमको ये जो 10% है हमें बिल्कुल अलग से इसको निकाल के रखना चाहिए। अब क्यों? क्योंकि इन्फेक्शियस वेस्ट को मैनेज करना, उसको डंप करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। अगर हम ये बाकी सारा भी इसके मिला देंगे तो आप सोचो कितना सारा हो जाएगा, तो इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी नॉन इन्फेक्शियस भी इन्फेक्शियस बन जाएगा। ये कैटेगरीज ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इनके रूल्स वगैरह आप खुद से देख सकते हैं कि 4 तरीके के वेस्ट, येलो रेड, ये आपने डेफिनेटली पढ़ा ही होगा, ठीक है। ये सारा आपने पढ़ा ही होगा। ओके, प्लीज। The organization adheres to laundry and linen ये हम management ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने अभी हाउसकीपिंग में पढ़ चुका है कि कैसे सफाई करनी है। ये हाइपोक्लोराइड लिखा है ना ऐसे करके, सो Yes, sir. दैट इज इट, ठीक है। किचन में सैनिटेशन में क्या होना चाहिए, ये एक बार पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। The organization adheres to kitchen sanitation and food handling issues. Adherence to statutory requirements, purchase and receiving of raw materials and fresh vegetables. Storage require room temperature, freeze temperature and freezer. Preparation में cutting, washing and cooking. Hot storage and supply as per diet plan issued by dietitian. General cleaning and pest control. Personal hygiene, health checkup and immunization of kitchen staff. Infection control aspects and quality assurance. Waste management. ठीक है, ये बेसिकली किचन पर्सपेक्टिव से बता रहे थे ये, ठीक है। आप देखिए इसको। HIC 5. The organization takes actions to prevent healthcare associated infection HAI in patients. The organization takes action to prevent catheter associated urinary tract infections (COTI). Insert catheters only for appropriate indications. Leave catheters in place only as long as needed. Ensure that only properly trained persons insert and maintain catheters. Insert catheters using aseptic technique and sterile equipment. Acute care setting. Follow aseptic insertion. Maintain a closed drainage system. Maintain unobstructed urine flow. Comply with CDC hand hygiene recommendation and standard precautions. ठीक है, क्या क्या किया जाना चाहिए, नॉर्मल चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। ये कॉटी के लिए क्या क्या होना चाहिए इसमें बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। VAE के लिए बताया हुआ है यहाँ पे। क्लैप्सी, जैसे क्लैप्सी के लिए क्या करना है, ठीक है। अब देखो कि सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए, ये थोड़ा सा आप देख लो इसको। ये फुल स्क्रीन हो गया, ये फुल स्क्रीन ही है, थोड़ा क्लियर नहीं है सर। क्लियर नहीं है, अब हो जाएगा, अब हो गया ना। यस सर। चलो अब पढ़ो। The organization takes actions to prevent surgical site infection. Before surgery may ensure patient bath or shower. Do not save patients. Only use antibiotics when recommended. Use chlorhexidine alcohol-based antiseptic solution to prepare skin. Surgical scrub technique, hand wash or alcohol-based hand rub. During surgery, limit the number of people and door being opened. Ensure all surgical equipment is sterile and maintain asepsis during surgery. After surgery, do not continue antibiotics to prevent infection. This is unnecessary and contributes to the spread of antibiotic resistance. Check wounds for infection and use standard dressing on primary wounds. ठीक है, एक्सरसाइज सर्जिकल साइड इन्फेक्शन को बचाने के लिए ये सब फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। IC6. The organization performs surveillance to capture and monitor infection prevention and control data. Core A. The scope of surveillance activities incorporates tracking and analyzing of infection risk, rate, and trends. Core B में verification of data is done regularly by the infection control team, authenticated by going through every data. Core C में surveillance is directed towards the identified high-risk activities
Define frequency and mode of surveillance. तो बेसिकली ये बताना चाहता है कि जैसे अगर कहीं इन्फेक्शन होता है, किसी कोई भी इन्फेक्शन जनरेट होता है या कुछ नया इन्फेक्शन होता है, तो उसका हमें एक डेटा बना के रखना चाहिए, ठीक है। और उस डेटा बना के रखना चाहिए ताकि क्या है, हम फ्यूचर में समझ सके भाई यहाँ पे ये इन्फेक्शन फैल गया था, यहाँ पे इन्फेक्शन फैल गया था, इस पेशेंट को ये वाला इन्फेक्शन था, उससे इन पेशेंट्स को ये फैल गया था, ताकि हम इसका रेगुलरली डेटा मेंटेन कर सके और रेगुलर सर्विलेंस कर सके फ्यूचर में, ताकि ये चीजें कम वो हो, मतलब फैले, ठीक है। अब जैसे क्या फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेटिंग कॉटी को कैसे करना है, वैप को कैसे करना है, ये सब आप देख चले। Surveillance includes monitoring compliance with hand hygiene guidelines. Use WHO hand hygiene checklist. Formula is number of compliance by number of opportunities into 100. Example, observing a procedure when 2 opportunities missed out of total 10 opportunities. उसको 8 by 10 into 100 80%. ठीक है, ये मतलब तरीका है इसको बता सकता है, ठीक है। ये है हमारे पेशेंट सेफ्टी की चेकलिस्ट। Surveillance includes mechanisms to capture the occurrence of multi-drug resistant organisms and highly virulent infections. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus MRSA infection is caused by a type of staph bacteria that has become resistant to many of the antibiotics. Multi-drug resistant gram-negative bacteria, a type of gram-negative bacteria with resistance to multiple antibiotics. Vancomycin-resistant enterococcus (VRE) infection with bacteria that are resistant to antibiotic called vancomycin. ठीक है, ये सब रेजिस्टेंट हो चुका है, तो इनका क्या है, इनका रेगुलरली सर्विलेंस रखना पड़ता है हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। अब वो कि ढंग से हाउसकीपिंग सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही है, उसका ये चेकलिस्ट है। मैंने बताया ना, ब्रश द फ्लोर किया कि नहीं किया, सुबह 7:30 बजे, 1:30 बजे, 7:30 बजे, ये सब चीजें जो हमने वहां देखा था, ठीक है। चलिए, Feedback regarding surveillance data is provided regularly to the appropriate healthcare provider. The organization identifies and takes appropriate action to control outbreaks of infection. Surveillance data is analyzed and appropriate corrective and preventive actions are taken. ठीक है, ओके। सो HIC टीम का क्या काम है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। HIC 7. Infection prevention measures include sterilization or disinfection of instruments, equipment, and devices. The organization provides adequate space and appropriate zoning for sterilization activities. Cleaning, packing, disinfection, and or sterilization. ये सेंट्रल स्टेराइल CSSD डिपार्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे, ये देखो, ये पहले तो उनकी डेफिनेशन बता रहा है, फिर ये बता रहा है क्रिटिकल डिवाइसेस कौन सा, सेमी क्रिटिकल डिवाइस, नॉन क्रिटिकल डिवाइस, नॉन, ठीक है, ये वाले कौन से डिवाइसेस हैं। फिर ये याद है हमने ये पढ़ा था आपको, ये कोविड टेस्ट और ये क्लास 5 इंडिकेटर्स, और ये इसको चिपका देते हैं, ऑटोक्लेव में डाल जाता है, जब उसका कलर चेंज हो गया तो इसका मतलब उसे सही से डिसइंफेक्शन कर दिया। ये हमने जब वहां पे पढ़ा था, ये और सॉइल जोन, क्लीन जोन, स्टेराइल जोन, वहाँ अलग अलग जोन्स होते हैं। मैं हमने पूरी उसकी वो भी देखी थी, एक एम्स भुवनेश्वर की हमने पूरी वीडियो देखी थी, याद होगा आपको, ठीक है। चलो, गो अहेड, प्लीज गो अहेड। HIC 8. The organization takes action to prevent or reduce healthcare associated infection in its staff. The organization implements occupational health and safety practices to reduce the risk of transmitting microorganisms among healthcare providers. The organization implements an immunization policy for its staff. The organization implements work restrictions for healthcare providers with transmissible infections. तो बेसिक जो ऑक्यूपेशन हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है, ऑक्यूपेशन हैजार्ड जो होता है हॉस्पिटल के अंदर, वो होता है NSI, नीडल स्टिक इंजरी, ठीक है। तो अभी हम उसमें डिटेल देखेंगे कि उस केस में क्या करते हैं और कैसे करना है, ठीक है। अभी देखेंगे इसको। The organization implements measures for blood and body fluid exposure prevention. Appropriate post-exposure prophylaxis is provided to all staff members concerned. सपोजिटली किसी के हाथ में ब्लड फैल गया है, या कोई निडल चुभ गई है, किसी पेशेंट को लगा है उसके अंदर उस स्टाफ को चुभ गई है, तो उसके पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में क्या किया जाना चाहिए, अभी हम देखें, ठीक है। Reduce the risk of occupational hazards. Adequate resources
standard precautions, pre-employment health screening, immunization for staffs, implements work restrictions, spill management, blood spill, mercury spill, chemical spill, post-exposure prophylaxis. तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस क्या चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोबारा से पूरा इसको डिटेल में पढ़ो, ठीक है। इसको मैं इसको दोबारा से आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ो इसको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये वाला ढंग से पढ़ो। निडल स्टिक इंजरी प्रोटोकॉल क्या होता है? Stop all the procedures, wash in flushing water, inform to ICN doctor, assess the patient for blood infection, HIV, HCV. If patient is सपोज करो किसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में आपको उसी नीडल से आपको एक्सपोजर हो गया, ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या करना है, आपको सारे प्रोसीजर्स रोक देने हैं, अपने हाथ को कहाँ फ्लशिंग वाटर के नीचे करना है, तीसरा क्या है, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। अब इसके बाद क्या करना है, पढ़ो। पेशेंट को एसेस करना है HIV या HCV के लिए। इफ क्या पेशेंट इज पेशेंट से इन्फेक्टेड, पेशेंट से पूछना है कि भाई HIV HCV है क्या, पढ़ो। if patient is infected, assess the vaccination status. If vaccinated, किसका वैक्सीनेशन पेशेंट का स्टेटस? हाँ जी, पेशेंट का अगर पेशेंट वैक्सीनेटेड है तो चेक द टाइटर एंड बूस्टर डोज। इफ नॉट वैक्सीनेटेड, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस देंगे। एक सेकेंड, ये वैक्सीनेशन स्टेटस पेशेंट का नहीं करना हमने, ये उस पर्टिकुलर स्टाफ का करना है जिसको नीडल स्टिक इंजरी हुई है। सर एसेस द पेशेंट फॉर ब्लड जो लिखा उसके ब्लड फॉर इन्फेक्शन, उसके बाद ये पेशेंट इज इन्फेक्टेड लिखा है तो हाँ, एक देखो, सुनो समझो, क्या हुआ है, आपने एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाया, लगाने के बाद में आप क्या कर रहे थे, अपने इंजेक्शन निकाल लिया और उसके अंदर रिकैप करने लगे आप, रिकैप करते करते एकदम से आपके हाथ में लग गया, ठीक है, तो जो पेशेंट को इन्फेक्शन है वो आपको होने के चांसेस है, हाँ या ना? यस सर। है ना? तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, पहले तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आपको बोलूं बाकी सब बंद करो, सबसे पहले आप अपना हाथ जो है पानी के नीचे डालो, मतलब तेज धारा के अंदर पानी के नीचे डालो, और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर दिया, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स को, इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्टर को। अब क्या करूंगा, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट को कोई इन्फेक्शन है कि नहीं है ना? तो मैं पेशेंट से पूछूंगा भाई आपको कोई HIV और HCV तो नहीं है, वो कहता है कि हाँ है, ठीक है, तो अगर उसने बोला तो ऑब्वियसली आपके पास में आने के चांसेस हैं उस चीज के, ठीक है। अब मैं आपका वैक्सीनेशन स्टेटस देखूंगा कि भाई आप वैक्सीनेटेड हो कि नहीं हो, ठीक है, या हो या नहीं हो, तो अगर हो तो क्या है, नहीं हो तो क्या है, ठीक है। ऐसे ही अगर पेशेंट इन्फेक्टेड ही नहीं है तब भी आपका वैक्सीनेशन स्टेटस मुझे चेक करना है, ठीक है। अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड आपको करनी है ना, प्रोवाइड वैक्सीनेशन, या लिखा है ना प्रोवाइड वैक्सीनेशन। यस सर। तो ये मैं पेशेंट को थोड़ी ना दूंगा, क्या फायदा है, एक्सपोजर आपको हुआ है, वैक्सीनेशन पेशेंट को स्टेटस अपना चेक करना है, पेशेंट का बस इन्फेक्शन स्टेटस चेक हाँ करना हाँ हाँ हाँ, पर मैं पेशेंट को क्या दिक्कत हुई है, कुछ भी नहीं हुई है, दिक्कत तो आपको हुई है ना। यस सर। ठीक इफ पेशेंट इज ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द सिलेबस की मॉडल है, सारी चीजें कंप्लीट कर ली हैं।